Morbida, eh? सुप्रभात सभी को। आज हम अरियाना के साथ हैं और एक ऑस्टियोपैथिक उपचार करने जा रहे हैं। खिड़की की ओर मुड़ो, हाथों को शरीर के पास रखो। अब मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी खास जगह दर्द या परेशानी है या फिर हम सिर्फ एक सामान्य चेकअप करें? सामान्य चेकअप करें। अच्छा, क्या तुम स्पोर्ट्स खेलते हो? हाँ, मैं फुटबॉल खेलती हूँ, लगभग 5 सालों से। अच्छा, क्या कभी चोट लगी? हाँ, दाहिने घुटने में। लेकिन सिर्फ हल्की चोटें, कार्टिलेज की हल्की समस्याएं। शारीरिक परीक्षण शुरू होता है। बैठो, हाथों को सीधा रखो। ऊपर दबाव डालो, नीचे दबाव डालो, बाहर की ओर दबाव डालो, अंदर की ओर दबाव डालो। तुम्हारी ताकत अच्छी है। गर्दन परीक्षण। अगर मैं तुम्हारी गर्दन नीचे झुकाऊं, तो दर्द होता है? नहीं। अगर मैं घुमाऊं और दबाव डालूं? नहीं। बहुत अच्छा। कंधे और पैरों की जांच। कंधों को क्रॉस कर लो, ऊपर दबाव डालो, पैर बाहर दबाओ। बहुत अच्छा। अब पीठ के बल लेटो। खेल और अन्य गतिविधियां। क्या तुमने सिर्फ फुटबॉल ही खेला है या और भी कुछ? मैंने बास्केटबॉल, टेनिस और घुड़सवारी भी की है, लेकिन फुटबॉल मेरा जुनून है। बहुत अच्छा। शरीर की जांच जारी। पैर सीधा रखो, ऊपर दबाव डालो। दूसरी तरफ भी करो। अब गर्दन घुमाकर दबाव डालो। अच्छा, सब ठीक लग रहा है। लेकिन अब मैं तुम्हारा पेट भी चेक करना चाहता हूँ। खाने की आदतें। तुम सही से खाते हो? हंसी, वीडियो में ये नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, मैं सामान्य रूप से खाती हूँ। अच्छा, कोई बहुत ज्यादा गड़बड़ी नहीं है। अब एक गहरी सांस लो, छोड़ो, एक और बार। बहुत अच्छा। गर्दन की ऐंठन और सोने की आदतें। तुम्हारी गर्दन थोड़ी टाइट लग रही है। क्या तुमने कोई चोट खाई? नहीं। क्या तुम अच्छे से सोती हो? नहीं, मैं अक्सर थकी हुई उठती हूँ। तुम्हारा तकिया कब से है? दिसंबर से। क्या तुम पक्के तौर पर सही तकिया इस्तेमाल कर रही हो? अब संदेह हो रहा है। ऑस्टियोपैथिक तकनीक। अब मैं तुम्हें एक तकनीक दूंगा, कोई दर्द नहीं होगा। अगर कोई क्रैकिंग साउंड, टूटने जैसी आवाज आए, तो परेशान मत होना। हंसी, मैं बस आवाज से डरती हूँ। कोई बात नहीं, इसकी आदत पड़ जाएगी। क्रैकिंग साउंड। अब दाहिनी ओर आओ। ब्रावो। रीढ़ की हड्डी और शरीर को संतुलित करना। हाथों को सामने जोड़ो, कोहनी को बराबर करो, गहरी सांस लो। Allora, braccia a me, morbidissima, brava. Gira il collo a sinistra, gira il collo a destra, giù. Qua sei tesa però, eh. Hai preso colpi, No, hai fatto incidenti, no, mai. sei solo un po' rigida in generale. Dormi bene? No. No? Ti svegli stanca? Sì, Ok, da quanto ce l'hai il cuscino? da dicembre, quindi quasi un Quindi anno. pochissimo, quindi va bene. Sei sicura che hai il cuscino giusto per te? Punto di domanda. A questo punto non mi fido. Ok. Va bene, allora senti, procediamo. Ti faccio la tecnica ma non sentirai nessun dolore. Ok. Se avverti rumore non ti preoccupare, tu stai bella rilassata come sei adesso che va benissimo e vedrai che non senti niente. Allora, aspetta che ti tolgo i capelli, se no, bravo, giù. Morbida, eh? 1, 2, male? No, Solo il terrore del rumore, eh?
Poi ci si abitua, diventa una droga, lo vorrai sempre. Non l'avevo mai fatta la testa. No, eh? 1, 2, bella morbida. Alla destra mi hai detto, giusto? Sì. Allora, vieni leggermente più in qua. Brava, stop, braccia a me. Ti prendi le spalle, allineiamo il gomito. Anche qui sentirai il rumore. Un bel respirone. Fuori l'aria. Ok. Allora, fianco sinistro. Gira di qua. Vieni vicina col sedere. Morbida. Piegami questa gamba. Brava, questa invece è dritta. Stai molle molle, eh. Braccio a me. Gomito, gomito. Ora lascia tutto morbido, ti sentirai cadere ma non cadi. Brava. Inspira. Fuori l'aria. Ok. Fianco di là. Ti porta nuovo, eh. Poi domani a calcio Esatto. fai tipo l'Avenger. Domani sera con l'allenamento. Spacchi tutto. Giù, 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 giù. Ok, anche qui, bella morbida. Brava. Un altro respirone. Fuori l'aria. Ok. Pancia su. Morbida, morbida. Brava. Morbida, morbida. Ok. Vieni, pancia in giù. Aspetta che si è aperto tutto. Vai, testa nel buco. Dimmi se respiri e sei comoda. Aspetta. Brava. Ok. Che sennò il video finisce molto male. Allora, non eri messa malissimo. Qualche blocco c'era, come hai potuto sentire, però cose direi di routine, cioè dei sovraccarichi perché non l'hai mai fatto. Però devo dire che ti promuovo assolutamente. Fai stretching, mi raccomando. E niente, continua a allenarti così perché stai facendo un bel lavoro. Secondo me stretching non ne fai tantissimo, però. No, non sono tanto là. No, eh? Questo non è piacevolissimo, non odiarmi. Ma sai che non è così male. Ah, strano. Sotto mi odiano tutti quando faccio questo. Ok. Allora, rimettiti seduta, ti potrebbe girare un po' la testa, quindi stai tranquilla. Brava. Ok, allora. Bella morbida. Mano sui fianchi. Quando te lo dico io, mi dai una bella gomitata all'indietro. Deve essere un colpo secco, come se volessi picchiarmi. Vai. Vai. Bravissima. Giù le braccia. Ok. Braccia dritte, spingi in su, spingi in giù, spingi in fuori, spingi in dentro. Ok, sempre mani sulle spalle, spingi in alto, spingi in alto, spingi in fuori, spingi in fuori. Perfetta. Direi che ci siamo, sai? Ti ripeto, continua così, aggiungi se riesci un po' di stretching, ma giusto per rendere un po' più elastico il muscolo, così che previeni un attimino anche quei danni, diciamo, dai classici stiramenti che purtroppo voi calciatori siete molto soggetti. No, ci siamo. Super Arianna,
Super promossa. Ti ringrazio, grazie a tutti, mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale. Ciao!